Okay, very good afternoon to you all. Boys and girls, very warm welcome to the session. I'm sure you're there. Great. So for all those students who are there, I would request you to please give me a thumbs up so that I should understand that you all are there. To understand some of the best IPM programs for 2022 and 23. So agenda for the day would be that for next 20 minutes, I'll be sharing my thoughts on which are the new IPMs, the one which are going to start this year or which are going to start next year, which is for the 2022 and 23, right? Welcome, madam. Welcome to the session. I request for all the students who are there, I would request to please make sure that you like the video before we start the session here. चलिए, so let's start the session here and let me make you understand कि कौन-कौन से नए IPMs हैं जो आपको काम आएंगे and some of the good ones to get into as well. So हमें पता है कि IIM Indore was the one Ivy League and then it went to IIM Rohtak. फिर last year हमने देखा कि there is another institution which has started there was IIM Bodh Gaya, IIM Ranchi and IIM Jammu, right? इन तीनों ने इकट्ठे शुरू किया था और इनका काफ़ी अच्छा feeling है, काफ़ी अच्छा इनका institutions हैं and so on. So which are the new IIMs which will be the part of the 2023 as well? उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं. Welcome Jay, welcome Anirudh. Good afternoon everyone. So let me start with the first one here. The first one that you see here is IIM Amritsar. So IIM Amritsar has also announced that they're going to start in 2023. Boys and girls, please be prepared for that. If you're preparing for 2022 this year, you will not have this good opportunity. But when I'm referring to IIM Amritsar, you would definitely be having this good opportunity. IPM, right, integrated program and management like BBA, MBA. क्या इसमें भी हमें exit program मिलेगा? हाँ, हमें exit program इसके अंदर भी मिलेगा. After 3 years, if somebody wants to exit, they have the right to do that. If they're going to do the complete thing, they're going to get the integrated program and management. What is so special about this? When we look into this, इसमें communication होगा, इसमें managerial and leadership competencies. This is what they're going to work with. One of the important element that one could see in Amritsar is it is going to provide you with an analytical reasoning, right? So they're going to help you out with the analytical reasoning. जो आज की तारीख में एक बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट, आज की तारीख का मतलब है इन द ईयर 2026, 27, 28 तब से जो रिक्वायरमेंट होगी, वजन ध्यान रखिएगा, डेटा साइंस, फॉरेंसिक, डेटा स्ट्रक्चर, डेटा मॉडलिंग, नाउ दीज आर थिंग्स व्हिच वुड बी रिक्वायर्ड. तो ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी एंड अमृतसर इज बाउंड टू गेट इनटू दैट. फिलहाल अगर हम बात करते हैं what next do they provide you with, obviously as we can see in here they provide you with the kind of information जो अभी तक वो लोग प्रोवाइड करते हैं, वो एक relevant information प्रोवाइड करते हैं with respect to the communication technology, with respect to the human rights and many other things as well. Let us talk about the placements जो अभी तक उनकी MBA के साथ होती है. बॉयज एंड गर्ल्स, मैं आपको बता दूं कि कोई भी अगर इंस्टीट्यूशन IPM स्टार्ट करता है और उनका ऑलरेडी कोई MBA प्रोग्राम चलता है तो IPM वाला जो प्लेसमेंट्स होती हैं वो जनरली प्लेसमेंट्स आपकी MBA के साथ ही होती हैं. तो दैट मीन्स जो आपकी MBA की प्लेसमेंट्स होंगी वही आपकी प्लेसमेंट्स IPM की होंगी. सो डू नॉट डिफरेंशिएट कि IPM की प्लेसमेंट्स अलग होती हैं और MBA का अलग होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा. सो अगर हम बात करें कंपनीज कौन कौन सी आती हैं, BMW इज द वन, अदानी ग्रुप, इन्फोसिस, शामी एंड व्हाट नॉट. PwC इज आल्सो द पार्ट ऑफ इट, राइट. सो रिसर्च कंपनीज आती हैं, मार्केटिंग कंपनीज आती हैं, टैक्स रिलेटेड कंपनीज आती हैं, जनरल सेल्स एंड मार्केटिंग की आती हैं. सो दिस इज व्हाट यू गोना गेट विद IIM Amritsar. If I look into the median salary of that 14.63, always and always, कभी भी आपने अगर किसी इंस्टीट्यूशन को देखना हो तो उसकी मीडियन सैलरी पे आप जाके देखिएगा, आपको मीडियन सैलरी से काफ़ी कुछ चीज़ें पता लग जाएंगी. सो मीडियन सैलरी इज 14.63 LPA, which is a decent one to start when we are referring to any MBA, right? MBA का 14.63 है, so IPM would also remain around that. So IPM would also remain around that. So अब आप देखिए कि एक MBA करने के बाद तुरंत इस कंडीशन में इन द ईयर 2021 का ये सारा डेटा है. 21 के अंदर 14.63, 21 जहाँ पे सारी दुनिया बंद बैठी थी, किसी को कुछ नहीं पता था, स्टिल 14.63, which is above 1 lakh per annum. That's a good one. That's a good one to get into, right?
So 14.63 median salary Amritsar is going to start in 2023. It would again be a good one. Now another question is कि सर क्या ये IPM का स्कोर लेंगे या अपना करेंगे? ऐसा कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं है. जहां तक मुझे लगता है, what I believe is they are definitely going to accept the scores of either IIM Jammu or for IIM Indore. Correct. तो इन दोनों का स्कोर वो जनरली एक्सेप्ट करेंगे. दैट्स व्हाट आई अज्यूम. और एक और चीज मैं आपको बता दूं बॉयज एंड गर्ल्स, जो लोग इस साल 2022 में इस साल आप लोग अगर IIM जम्मू का पेपर देने वाले हैं, तो IIM का जम्मू का पेपर इज गोइंग टू बी विच इज GMAT प्राइमरीली, वो एक अलग लेवल पे होने वाला है. इट्स गोइंग टू बी टफर देन व्हाट वाज देयर लास्ट टाइम. सो उसके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा. करेक्ट. So this is what they're going to start in 2023. Now coming to the next one that you have on the screen. What you can see here is NALSAR Hyderabad, जिन्होंने last year शुरू किया था. When we talk about NALSAR Hyderabad, it's again a wonderful institution to get into. BBA MBA integrated program, again equivalent to IIM Indore. जो चीजें IIM Indore के अंदर हैं, वही सारी चीजें NALSAR Hyderabad के अंदर हैं. So what all things कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं? Why what all things can be the part of this? When we talk about NALSAR Hyderabad, I am saying you would have internships, you would have summer internships, you would have corporate interactions, you would have foreign tours, right? So which is again a foreign exchange program, right? बॉयज मैं आपको बता दूं, आपको earn करना पड़ता है ये सब चीजें. ये आपको by default नहीं मिलती हैं, right? So only few people who show and prove that they're worth it, these are the people who actually go to the exchange programs, right? So NALSAR Hyderabad is again a wonderful opportunities. The companies that generally come in there are Bajaj Allianz, IIFT Tokyo, Future Generali and so on. अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, so इस integrated program का जो median 16.5, though they have started with this one recently, but this is what been again predicted 16.5 LP on looking into the structures, looking into the kind of bondings that they have. और इस साल जो पहली बार वो लोग internships के लिए निकले हैं, we could have derived that 16.5 LP as something which is on an average a student would be getting there, right? Okay, somebody is asking a question कि सर क्यों टफ होगा? क्यों टफ होगा? क्योंकि पिछली बार इजी था, फर्स्ट टाइम हुआ था इसलिए वो इजी था, और इस बार वो टफ होगा. इट्स दैट सिंपल अबाउट इट. देयर इज नो सेकंड थॉट टू इट, राइट? इस साल जैसे CUET आपका कंपैरेटिवली लोअर हो सकता है, बट नेक्स्ट ईयर वो एक टफर कंपटीशन होगा फॉर श्योर. कहीं पे भी पहली पायलट प्रोजेक्ट में पहली बार करने में आपको सहूलियत मिलती है. फॉर एग्जांपल NALSAR हैदराबाद की अगर मैं बात करता हूँ, लास्ट ईयर जिन लोगों ने स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था, उनका एडमिशन स्विफ्ट था, उनका एडमिशन स्विफ्टली हुआ था, उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं बिकॉज दे ऑलवेज कम अंडर द पायलट प्रोजेक्ट, राइट? बट अब जो इस साल जाएंगे उनके लिए कंपैरेटिवली टफर होने वाला है, बिकॉज अब वो इतनी आसानी से स्टूडेंट्स नहीं लेंगे. इसी तरह से इन द ईयर 2023 इफ यू गोइंग टू टेक NALSAR हैदराबाद, आई मीन इट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. ठीक है, सब चीजें बदलती जाती है साल दर साल और कंपटीशन टफ होता जाता है. इसीलिए let us get into the next one. The next one which is again into the league is the IIM Shillong, which is going to start next year 2023, which is going to be an integrated program here again. BBA MBA सर exit program सब में होता है, exit program इसमें भी आपको मिलेगा. अभी तक जहाँ तक हम बात करते हैं, शिलोंग comparatively being a new college, IIM Shillong, we look into that. It again provides you with an analytical reasoning. It provides you with a communication, managerial and leadership competency, right? So आपको जो इसकी मेन खासियत है वो यही है कि वो rigorous और holistic program के रेफरेंस में बात करता है. वो आपको एक comparatively 360 degree approach प्रोवाइड करवाएगा is IPM program के तहत. They're going to provide you with a 360 degree program. They're going to provide you with the overall development. This is what they say. And the companies that generally come on there is an SBI Capital, HSBC, D Shaw, ICICI Prudential and so on. Companies would not make sense much here. कहीं पे भी कंपनीज का आना कोई वो नहीं होता है, बट डिपेंडेंसी होती है कि कंपनी क्या काम करवा रही है. व्हाट काइंड ऑफ अ वर्क इज इम्पोर्टेंट. कंपनीज होगा इम्पोर्टेंट, दैट्स आई ओके, लेट मी एग्री दैट कंपनी इज इम्पोर्टेंट, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज व्हाट वर्क दे आर टेकिंग फॉर, राइट? से फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ देम आर टेकन फॉर द रिसर्च वर्क. सम ऑफ देम आर आल्सो बीन टेकन for the second pointer, which is what been known as consultancy. Then some have been taken for the finance, some for the IT structures and so on. तो अलग अलग चीजों के लिए लेके जाती हैं. वो किस क्या काम करेंगे स्टार्टिंग में, वो एक important portion होता है, rather than which company is going to pick or which company is going to come for the campus, right? So we see that it comes out to be 17.5 LPS. So IIM Shillong एक अच्छा
अपॉर्चुनिटी आपके लिए होने वाली है, बिकॉज अभी तक जैसे हमने देखा, when we talk about NALSAR 16.5, when we talk about IIM Amritsar 14.63, with this we see that IIM Shillong is going to be 17.5, जो इस साल रहा है 2021 का डेटा मैं आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. With this I can definitely say that IIM Shillong is going to be one of the good opportunities for you, right? So this is what the IIM Shillong also. I'm sure ये आपको बात समझ में आ गई. 2023 में IIM Shillong भी आपके साथ आने वाला है. This is what an addition that you would get. Let me go with the next one. Is the next one, which is known as IIFT Kakinada campus. Boys and girls, welcome. IIFT Kakinada campus is going to start from this year. इस साल से वो शुरू हो रहा है, जिसमें आपका एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, which is again an integrated program they're going to provide you with. But इसकी खासियत ये है, IIFT is among the top 10 management colleges in India, right? So इसमें आपको जो BBA करवाएंगे वो business analytics होगा, जो MBA होगा वो international business में होगा. So that means that's going to give you a deadly combination. जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अब के बाद से for the year 2025 onwards, अगर आपको कोई भी मैनेजमेंट कोर्स करना हो तो डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, प्रेडिक्टिव मैनेजमेंट, कंज्यूमर बिहेवियर, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, इन डोमेन के अंदर स्कोप रहेगा एंड देयर वुड बी ह्यूज डिमांड फॉर इट, राइट? IIFT ने स्पेसिफिक किया है कि वो जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्टेम के ऊपर स्पेसिफाई करता है, इनका जो पूरा कोर्स रहेगा वो भी स्टेम स्पेसिफिक रहेगा ना. स्टेम स्पेसिफिक रहने का मतलब ये है कि मैथमेटिक्स होनी आपके लिए ज़रूरी है. बिना मैथ, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स के लाइफ आगे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव नहीं हो सकती. बॉयज एंड गर्ल्स, let me give you a big sentence here. Let me say this big sentence here. बिना mathematics, economics या statistics के, if you're thinking a high paying career, that's always going to be a question mark. इसीलिए IIM इंदौर का भी अगर आपने देखा हो तो IIM इंदौर के 3 पिलर्स के ऊपर वो टिका होता है. पहला पिलर होता है मैथमेटिक्स, दूसरा होता है इकोनॉमिक्स एंड द थर्ड पिलर इज ह्यूमैनिटीज, राइट? सो इसमें से 2 स्ट्रॉन्ग पिलर जो है वो इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स के. ऐसी IIM रोहतक ने एंड सो ऑन, दे हैव आल्सो डिसाइडेड ऑन देयर स्ट्रक्चर्स देयर. IIFT, when we talk about, is the business analytics plus the international business as well. So if you're looking for the NELSAR form, NELSAR के फॉर्म इस साल के आप उनकी वेबसाइट पे जाइए. उनकी वेबसाइट पे एडमिशन प्रोसेस शुरू हो चुका है फॉर द ईयर 2023 प्रोसेस शुरू हो चुका है. सो प्लीज बी द पार्ट ऑफ इट, राइट? Now, business situations के लिए, business analytics के लिए, this is what solving skills supported by appropriate analytical techniques or ethical and socially conscious judgment. So this is again a wonderful. देखिए हर इंस्टीट्यूशन का एक अपना एक विजन और मिशन स्टेटमेंट होता है. जब तक आप उस विजन स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनती है. And IIFT, because I have been observing, I have been scanning, and I have been stalking IIFT for long, I realized that they actually would agree with what they have talked as in their vision statement, right? The companies that get in here are the Dell, HDFC Bank, EY and Shenyang, PwC, McKinsey's, Deloitte and so on. सारी जितनी भी आपकी मार्केट रिसर्च की, आपकी टैक्स रिलेटेड इश्यूज, फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज, analytics related, right? All these companies generally take from the IIFT as well, not just for the international business but for other things as well. So BBA and business analytics आपके लिए एक बहुत अच्छी opportunity यहाँ पे होने वाली है, right? I'm sure you would have got this. और ये इसी साल से 2022 से है. Now the score that they're going to accept, IIFT would have their इनका कोर्स और वो उसके बारे में आपके साथ अभी डिस्कशन करता हूँ. लेट मी गो हेड फ्रॉम हियर, व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, व्हिच इज NFSU गांधीनगर, राइट? So NFSU Gandhinagar is for this year. NFSU would refer to as the National Forensic Sciences University, which is going to start this year. And इसकी खासियत ये है कि that is going to again provide you with is for this year. NFSU would refer to as the National Forensic Sciences University, which is going to start this year. And इसकी खासियत ये है कि that is going to again provide you with is for this year. NFSU would refer to as the National Forensic Sciences University, which is going to start this year. And इसकी खासियत ये है कि that is going to again provide you with is for this year. NFSU would refer to as the National Forensic Sciences University, which is going to start this year. And इसकी खासियत ये है कि that is going to again provide you with is for this year. NFSU would refer to as the National Forensic Sciences University, which is going to start this year.
And इसकी खासियत ये है कि that it's going to again provide you with is for this year NFSU will refer to as a National Forensic Sciences University, which is going to start this year. And इसकी खासियत ये है कि that it's going to again provide you with is for this year NFSU will refer to as a National Forensic Sciences University, which is going to start this year. And इसकी खासियत ये है कि that it's going to again provide you with is for this year NFSU will refer to as a National Forensic Sciences University, which is going to start this year. And इसकी खासियत ये है कि So should I continue? Yes, sir. Continue करो. Okay. So let me continue with this. We are going to talk about here. So should I continue? Which is NFSU Gandhinagar. So when we talk about NFSU, we have already talked about that comes out to be as National Forensic Sciences University. Now this university. So let me continue with this. We are going to talk about here. So should I continue? Which is NFSU Gandhinagar. So when we talk about NFSU, we have already talked about that comes out to be as National Forensic Sciences University. Now this university. So let me continue with this. We are going to talk about here. Should I continue? Which is NFSU Gandhinagar. So when we talk about NFSU, we have already talked about that comes out to be as National Forensic Sciences University. Now this university. So let me continue with this. We are going to talk about here. Should I continue? Which is NFSU Gandhinagar. So when we talk about NFSU, we have already talked about that comes out to be as National Forensic Sciences University. Now this university. So let me continue with this. We are going to talk about here. Should I continue? Which is NFSU Gandhinagar. So when we talk about NFSU, we have already talked about that comes out to be as National Forensic Sciences University. Now this university. So let me continue with this. We are going to talk about here. Should I continue? Which is National Forensic Sciences University. Now this university. So let me continue with this. We are going to talk about here. Should I continue? Which is I think you would be in a position to hear me now with it. Boys and girls, if you can see me and hear me properly, I would request you to please type in a hi for me again. Please type in if I am audible properly to you. Please type in clear or clean. Right, waiting for your response, please. Where I need to help you out with an NFSU. Good enough. So I think you can hear me now. Let me continue with this. Yes, clear. Thank you. So let me help you out with National Forensic Sciences University, which is of the national repute, right? And they're going to provide you with, thank you for response. They're going to provide you with an IPM, which is an integrated program in management, और ये इसी साल से आपका शुरू हो रहा है, which is year 2022. Now इसकी जो खासियत ये है that this institution, as we have already talked about, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि एक नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी है अपने आप में, जो कि प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन ऑन फॉरेंसिक, अकाउंटिंग, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस इंटेलिजेंस के बारे में. दिस इज व्हाट दे को प्रोवाइड विथ. और इनका काम ऑब्वियसली एज यू कैन सी इन द थर्ड पोर्शन वी सी दैट द एकेडमिक लर्निंग एंड प्रैक्टिस इन द फील्ड ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज. तो फॉरेंसिक साइंसेज, बिजनेस इंटेलिजेंस, इसको मिला के
एक नया प्रोडक्ट, एक नई चीज़, एक नया रेफरेंस के बारे में ये लोग बात करते हैं, जहाँ पे ये अपनी लॉ में लीगल स्टडीज़, क्रिमिनोलॉजी, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव, सब चीज़ों को ये मिक्स करते हैं, राइट। Most of the placements, if you would see here, would be from the Home Ministry, Information Broadcast Ministry, or you would have Police Services, KPMG, PWC. इनका एक MBA का कोर्स भी चलता है जो कि बहुत पुराना नहीं है, recent ही है, hardly been year or two. Now they have moved into IPM program as well. और ये program interesting program होने वाला है ना. Why is this going to be an interesting program? Let me take you to a file or to a folder जहाँ पे आपको कुछ चीज़ को समझ में आएगा. Now this is what the brochure, the one that they're going to provide you with. जैसे मैंने आपके साथ अभी कहा कि ये जो forensic accounting होने वाला है, या फिर business intelligence होने वाला है, या फिर predictive analytics होने वाला है, these things are going to take you to the next level, right? And this is what we'll have to understand here as well. This is what the university brochure, where it says they're going to provide you with a BBA, MBA integrated program here. Let me take you to it. इसमें क्या चीज़ इंटरेस्टिंग और क्या चीज़ खास है मैं आपको लेके चलता हूँ. पहले तो आप इसके सेमेस्टर्स जब आप देखेंगे, you would find most of the semesters are of the new age career variety. These are not of something which is जो पुरानी यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से बना हुआ होता है, ऐसा कुछ नहीं है. ये नया है, इसके अंदर आप चीज़ें you would find new elements there, right? This is divided into different semesters. This is what that you see, and then you also see that one of the semester is divided into different papers. तो आप अलग-अलग papers के अंदर बहुत सारी चीज़ों के combinations करते हैं, right? There are many combinations that you generally pick in there. Similarly, you also do have options to go for कि आपने कौन सा optional papers, जैसे optional papers आपके पास होते हैं उन optional semesters, optional papers के अंदर आप decide कर सकते हैं what paper that you want to get in there. It's going to be an interesting game for a very basic reason. इसमें आपकी forensic information plus आपके business intelligence की plus आपके data science का structures को mix करके, and then they have taken it to the forward, right? For example, when we look here, we find that Gandhinagar is going to be 40 here. That's the seat for the integrated program they've started with it. Delhi का भी कोई confirmation नहीं है, but for Gandhinagar, yes, they have already confirmed for it. So BBMBA program, Gandhinagar 40 seats are there, 5-year program. और इसकी खासियत मैं आपको बता दूं, इस पूरे 5 साल में जो आपकी ट्यूशन फी लगने वाली है, वो ट्यूशन फी सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए लगने वाली है. बॉयज प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, ये इंस्टीट्यूशंस ऑफ repute होते हैं, right? Now when I'm talking about institution of national importance का मतलब क्या होता है? When I refer to the institution of the national importance, इसका मतलब ये होता है कि ये वो IIT, IIITs, IIMs उनके लेवल के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उन्हीं को इन चीज़ का दर्जा दिया जाता है जो कि कहा जाता है इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस. आई एम श्योर ये आपको ये चीज़ दिख रही होगी, राइट? सो ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है. ड्यूरेशन वुड बी 5 years. 5 lakh rupees is the only tuition fee, apart from other expenses that might happen there, but this is going to be a good opportunity for you. Then the next thing that you need to understand is pass 10+2 with a minimum of 60% marks aggregate for the reserve category. So minimum 55% marks is aggregate for any of the category. Reserve category you would have 55, but for general that would be 60. अब इसका एडमिशन प्रोसेस कैसे होने वाला है? और इट विल बी द बेसिस ऑफ एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन. इनका अपना खुद का एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, ये कोई IIM इंदौर का या किसी का नहीं लेने वाले. अनलाइक IIFT is going to take the score of IPM Indore, while when we refer to this institution, it is not going to take any other score. So NFSU is prominent that they're going to take their own test for it. Now इसका फॉर्मेट क्या रहेगा? कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 चॉइस मल्टीपल चॉइस कैरिंग 100 मार्क्स इन देयर, एंड दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ जनरल एलिमेंट. और वो जनरल एलिमेंट्स कौन कौन सी चीज़ें होंगी? वही जो चीज़ें हम ऑलरेडी करते हैं, विच इज़ अबाउट अ जनरल नॉलेज, विच इज़ गोइंग टू बी लॉजिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, देन मैथमेटिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT कम्युनिकेशन, राइट? सो आई एम श्योर आपने इस चीज़ को देख लिया होगा कि कैसे ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है. आपको एक बात इसके अंदर एक और समझ में आई होगी. आई एम श्योर यू वुड हैव गॉन थ्रू एंड यू वुड हैव रियलाइज कि ये एक अभी इसके अंदर बहुत ज़्यादा रश नहीं होगा, राइट? नॉट मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स माइट बी नोइंग अबाउट दिस.
तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी कि आप इसको एक्सेप्ट करें, इसको ये आपको ले सके। NFSU वुड बी इन अ पोजीशन टू टेक यू दिस ईयर। नेक्स्ट ईयर क्या होगा, नोबडी नोज अबाउट इट। सो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इसको ली जा सकती है। नाउ द क्वेश्चन दैट विल कम फ्रॉम योर साइड इज कि सर मैं इंस्टीट्यूशन में क्यों जाऊं, व्हाई शुड आई बी गोइंग इन दैट। अगर आपको लगता है कि आपने बिजनेस एनालिटिक्स करना है, अगर आपको लगता है दैट यू वांट टू गेट into strategic management, if you believe that you want to get into data analytics, if you want to get into data science with respect to the forensic elements, then this is going to be a wonderful combination for you. ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो मेरा रिकमेंडेशन आपके लिए ये रहेगा। आई एम श्योर, एक बार मैं फिर से देयर वाज अ लिटिल इशू, सो एक थोड़ा छोटा सा आपको रिवीजन दे दूं इसमें क्या क्या हमने बात किया है। वी हैव सेड IIM Amritsar which is going to start next year, उसके लिए भी प्रिपरेशन, whether they're going to take the score of IPM Indore or not, probability they're going to start with their own element, they're going to start take their own test, IIM Amritsar. Then the another one would be NALSA Hyderabad. NALSA Hyderabad takes the score of IPM. ये आपका IIM इंदौर भी लेते हैं, ये आपका रोहतक भी लेते हैं, IIM जम्मू भी लेते हैं और IIT का स्कोर्स भी लेते हैं। तो उसको कैलिब्रेशन का इनके पास अपना एक प्रोसेस है with which they're going to do it. NALSA Hyderabad is again an opportunity. Then we talked about IIM Shillong. IIM Shillong which is going to start next year. IIM Shillong may take the score of IIM Indore, but again this is going to be a wonderful opportunity. Be prepared for that. IIFT Kakinada campus, which has started this year, is a wonderful opportunity. IIM Indore is a score which has been accepted by IIFT. जिसने भी business analytics और international business, ये deadly combination होने वाला है, and this is going to be wonderful one. Let me tell you, जितने भी नए IIMs हैं, जितने भी नए IIMs हैं, उन सारे नए IIMs से IIFT is a far better than. Let me tell you, only after 4 IIMs, so let me say 5, अगर मैं ब्लैकी को छोड़ के बाकी की बात करूं, उन सब के बाद ब्लैकी के बाद IIFT का नंबर आता है, right? So top 5 को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद IIFT is a wonderful opportunity that you may get into. Then we also talked about NFSU, which is Gandhinagar, which is going to start this year. It's a wonderful opportunity. इनका अपना स्कोर होगा, इसके लिए नोटिफिकेशन अभी रिलीज होगा। इनका अभी जो एडमिशन प्रोसेस है वो शुरू नहीं हुआ है। You would soon be getting the information for it, right? Okay, now I am open for the question. Will applied mathematics be considered for IIFT and the website? Okay. Now, when we refer to the IIFT, इसकी एक खासियत ये है कि that they'll be looking for mathematics per se. Whether applied mathematics would be applied for it, इन्होंने अभी तक कोई information नहीं दिया है. Once we going to get the information for that, we would definitely be getting back to you on this, right? Okay, what is the median package of NFSU? Okay, now that's a good question, Bhuvan, though. But इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, because NFSU की most जो major chunk जाता है वो ministries की तरफ जाता है, वो government departments में जाता है। और जब government departments की बात आती है तब पे पैकेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, क्योंकि जो बाकी का पेरिफेरल होता है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आई एम श्योर यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट? सो वो पेरिफेरल इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए मैंने जानबूझ के इसका नहीं दिया है। दूसरी चीज़, क्योंकि इनका मैनेजमेंट का जहाँ तक सवाल है, मैनेजमेंट का सवाल है, MBA का जो मैंने आपको कहा कि अभी रिसेंटली शुरू हुआ है, तो उसका कोई बहुत अभी प्लेसमेंट्स का इंफॉर्मेशन नहीं आया है, राइट? सो जब तक प्लेसमेंट का इंफॉर्मेशन नहीं आएगा मैं कुछ प्रिडिक्टेबिलिटी के साथ नहीं बता सकता। तो that you'll get with an amalgamation, I am sure for that you would be getting into a different ball game altogether, right? तो उस समय आपको इस सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, right? Okay, I hope you can hear me, right? So you can hear me properly. So what is blacking?